Starting with the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durood Salam on beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, mathematics, SSC2, exercise 2.5, and question number 3 is, if alpha and beta are the roots of this equation, then form equations whose roots are, and in first part roots are alpha square plus beta square, and we have to form the equation, and alpha and beta are the roots of this equation. So students, first we will write this equation, and the equation is x square plus px plus q is equal to 0. From this quadratic equation we will get the values of a, b and c, and in standard form the coefficient of x square is a, so the value of a is 1. The value of b is always the coefficient of x, and the coefficient of x is p, and the value of c is always real number, that is q. So students, from this equation we have got the values of a, b and c, that are 1, p and q. And now students, roots are alpha square and beta square. So students, first we will find the sum of the roots and then product of the roots, and then we will put the values of sum and product, and that will be the values. So students, sum will be sum of the roots that will be alpha square plus beta square, and students, we will add 2 alpha beta as well as we will subtract 2 alpha beta, so that we will get alpha plus beta whole square and 2 alpha beta. So students, we will have alpha square plus beta square plus 2 alpha beta. 2 alpha beta is added in this equation by our side, so we will have to subtract 2 alpha beta as well. And students, these first three terms will be packed in the formula alpha plus beta whole square minus 2 alpha beta. And now students, we will use the values of alpha plus beta, that is minus b over a whole square minus 2, and in alpha beta we will write c over a. And students, when we take the square of minus, it will become plus, and it is b square over a square minus 2c over a, and the value of b is p, so it will be p square over, and the value of a is 1, that is 1 square minus 2, and the value of c is q over 1. And students, we will have the sum, that is p square minus 2q, and it is sum. Now students, we will find the product, and the product will be alpha square beta square, product of the roots, and that are alpha square into beta square, because we have to multiply both the roots and it will become alpha square beta square, and alpha beta whole square, and alpha beta mean product, and product is c over a whole square. And students, the value of c is q, whereas the value of a is 1, so we will have p over 1 square, and p square mean p square over 1 square mean 1 square, and that will not be written. So students, we have finded out the sum, that is p square minus 2q, and sorry students, here the value of c is q, not p. So here we will write q over 1 square, and when we take the square of q, it will become q square over 1 square, and 1 square mean 1, and 1 as denominator will not be written. Now the equation is always, students, x square minus sum of x plus product is equal to 0. So x square minus sum is p square minus 2q into x plus product is q square is equal to 0, and that is our equation of question number third's first part. Now I am going to check the answer. Exercise 2.5, question number 3, and first part, x square minus p square minus 2q and plus q square. So students, our answer is
correct. So you need not to write here this, and it is our required equation, and it is the first part. Now students, I am going to solve the second part or B part, and the B part is, it is B part, not second part. B part is alpha over beta and beta over alpha. These two roots are given, and we have to find the equation, and alpha and beta are the roots of this equation. So students, this equation, इस equation को हम दोबारा लिखेंगे, और equation है students x square plus px plus q is equal to 0. इस equation से हम a, b और c की वैल्यू फाइंड करेंगे. a होगा 1, b होगा p और c है q. अब स्टूडेंट्स हमने सम फाइंड करना है दोनों रूट्स का, तो मैं इधर लिखूंगा सम. तो रूट्स हैं जी अल्फ़ा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फ़ा. तो इसका एलसीएम आ जाएगा अल्फ़ा बीटा. अल्फ़ा बीटा को बीटा से डिवाइड करेंगे तो बाकी अल्फ़ा बचेगा. अल्फ़ा को अल्फ़ा से मल्टीप्लाई किया तो अल्फ़ा स्क्वायर, प्लस अगेन एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड किया तो अल्फ़ा कैंसिल होगा. बीटा बीटा से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स बीटा स्क्वायर. अब इसमें हम अल्फ़ा बीटा प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फ़ा बीटा माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और इसको हम डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स अल्फ़ा बीटा से. ये जो है डिनोमिनेटर है उसको मैंने डिवीजन फॉर्म में लिख लिया. अब इन तीनों टर्म्स को हम फार्मूला में पैक कर लेंगे, और ये आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, और ये डिवाइड कर रहा है स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय अल्फ़ा बीटा. अब हम इसमें वैल्यूज पुट करेंगे. अल्फ़ा प्लस बीटा का मतलब है जी माइनस बी ओवर ए होल स्क्वायर माइनस 2, और अल्फ़ा बीटा का मतलब है सी ओवर ए, और इसको हमने डिवाइड करवाना है स्टूडेंट्स. प्रोडक्ट फिर सी ओवर ए है तो हम इसको ऐसे डिवाइड करवा देंगे. अब जब हम माइनस का स्क्वायर लेंगे तो ये प्लस आएगा, और ये आ जाएगा बी स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस 2 सी ओवर ए, और मल्टीप्लाई बाय ए ओवर सी. अब स्टूडेंट्स हम इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो b की वैल्यू है हमारे पास p, तो ये आ जाएगा p स्क्वायर ओवर 1 स्क्वायर माइनस 2, c की वैल्यू है q ओवर a की वैल्यू है 1, और यह आएगा मल्टीप्लाई बाय a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है हमारे पास q. तो स्टूडेंट्स ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q, ये जब 1 से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा, और 1 स्क्वायर मीन 1, और ये q जब इनसे डिवाइड करेगा तो ये आ जाएगा p स्क्वायर माइनस 2q ओवर q, और ये है हमारा सम. अब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे. तो जब हम इसका प्रोडक्ट फाइंड करेंगे इन दोनों रूट्स का जो हमें गिवन है प्रोडक्ट, और प्रोडक्ट होगी स्टूडेंट्स हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आएगा अल्फ़ा ओवर बीटा मल्टीप्लाई बाय बीटा ओवर अल्फ़ा. अल्फ़ा अल्फ़ा से कैंसिल होगा, बीटा बीटा से कैंसिल होगा, तो प्रोडक्ट आ जाएगा हमारा 1. और अब जो इक्वेशन बनेगी वो आपको पता है कि इक्वेशन क्या होती है. तो इक्वेशन होती है स्टूडेंट्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ एक्स प्लस प्रोडक्ट इज इक्वल टू 0. तो ये आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम था स्टूडेंट्स हमारा पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट आया हमारा 1 इज इक्वल टू 0. ये है हमारी रिक्वायर्ड इक्वेशन. अब इसका भी मैं आंसर चेक करता हूँ. 2.5 स्टूडेंट्स एक्सरसाइज है हमारे पास 2.5, और इसका लास्ट क्वेश्चन है. तो इसमें स्टूडेंट्स उन्होंने ये जो डिनोमिनेटर है उसको रैशनलाइज किया है, यानी कि इसको भी q से मल्टीप्लाई किया है, इसको भी किया और इसको भी किया. तो वो q जो है वो एज डिनोमिनेटर खत्म होगा, तो हम q से सबको मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये आएगा q इंटू एक्स स्क्वायर माइनस q इंटू पी स्क्वायर माइनस 2q ओवर q इंटू एक्स प्लस q इंटू 1 इज इक्वल टू q इंटू 0. अब स्टूडेंट्स हम q से इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्यू एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेगा तो ये आ जाएगा क्यू एक्स स्क्वायर माइनस ये क्यू एस क्यू से कैंसिल होगा, तो बाकी आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस 2q इंटू एक्स प्लस q1 से मल्टीप्लाई करेगा q इज इक्वल टू 0, क्योंकि जब q 0 से मल्टीप्लाई करेगा तो वो
ज़ीरो आ जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज 2.5 और इट्स इनफ फॉर टुडे। मे अल्लाह ऑलमाइटी ब्लेस यू ऑल द टाइम एंड हैव अ गुड डे।